Hello and welcome back everyone to chemistry classes. So in this video we are going to discuss something which is asked by UPSC CSE examination. So we were looking into those questions and there was a very interesting question which UPSC CSE 2024 asked in chemistry optional subject. And oftenly this is a syllabus of a bachelor's degree, and we do not study such kind of equations in bachelor degree. So I thought you should make a video on it so that we get clarities if somebody of you is preparing for the CSE exam, and even if there are some other exams which you are preparing. And this is a very good concept which was being asked. So the question was about superheated liquids. Okay, and they said that we have to justify how liquids get superheated based on the Kelvin's equation. So let us go through what was the question and how can we answer that question, and what is Kelvin equation. So before going into that, we need to understand certain things like the vapor pressure. For example, when we are talking of vapor pressure of a liquid, supposedly here is a liquid, okay, and it is a closed liquid, okay, and since vaporization can take place of a liquid at any temperature, so there would be certain vapors associated here, and there will be a continuous condensation and evaporation that will be happening. And equilibrium pressure, which we get here because of the vapors, that would be called the vapor pressure of a liquid. So every liquid will have a vapor pressure when it is in a closed chamber. So whenever we are talking of vapor pressure, what we do is we generally assume, and it is in fact true also, that the surface of the liquid is flat. So if we take a very long cylinder like this, the surface of the liquid remains flat. So there is a vapor pressure because of that. But there are certain times when we don't take liquid in a such a vast or a wide container. We may take it in a capillary also. For example, uh, we are having this. I dip that capillary into this. Suppose this is a liquid. Okay. Now what happens is that there is a inherent properties of certain liquids. They can be more adhesive and they can be more cohesive. So for example, if there is a liquid uh, which can have a stronger bond or a stronger interaction with the glass surface of the capillary, so what will happen is that there will be a meniscus that will develop here, a curve like this. Okay, and there can be certain liquids where the meniscus can be opposite, like they do not attract the glass surface, and the meniscus can be like this. Okay, so here is where the Kelvin's equation's importance comes out. So this is a uh, curved surface. This is a curved surface. Whenever we are talking of vapor pressure, we generally talk of flat surfaces. But now, since this is a curved surface, it would have a different vapor pressure. So what it would have a different vapor pressure at around above it. Okay, and both of them will be having a different vapor pressure, and that is where the importance of Kelvin's equation comes out. So it's important because we are talking of uh, radius, a curvature that is being forming within the liquid or outside the liquid. Okay, this is a curvature that is happening. So here is the importance of Kelvin equation that comes in. So what is the equation, and we'll deal with it. So it is derived for a convex liquid like this. Okay, so a liquid which is having a much attraction within itself than with the glass surface or with the surface of the thing which it is dipped in. Okay, so when you're talking of it, so see there is a radius which is getting developed over here. Okay, and there is a pressure. That pressure be P. Okay, this is the vapor pressure of the liquid with the curved surface, and let P naught be the vapor pressure of a liquid which is flat. Okay, we need to compare it. So that comparison is given by the Kelvin's equation. If we talk of it, log natural, the pressure of a curved surface divided by the vapor pressure of a flat surface is equal to 2 into the surface tension into the molar volume of the liquid into R, which is the radius which is getting formed of the curvature, the universal gas constant, and the absolute temperature. So here we do not value this much because this is a constant for any given liquid, but what changes is the R. Okay,
So what we get here is that this thing is inversely proportional to the radius of the curvature. Okay. So when we talk of this, so this is the liquid. It is inversely proportional to the radius of the curvature. And supposedly we're having a liquid which is having an inverse curvature like this. We're having an inverse curvature like this. There would be radius here also. For that kind of a liquid, the equation is same but with a minus sign. Okay. So in fact, what happens is it is now directly proportional with radius because of the minus sign. And we need to look here what happens here because of this plus sign and because of this minus sign. And then we'll jump into why certain liquids go into superheating. So this is the equation which we need to learn. So whenever there is formation of a radius, okay, supposedly we are having this kind of liquid, okay, this kind of liquid. If we're talking about the first equation. So let any r be any radius which is getting formed. If there is certain curvature that is getting formed, if you put any value of r, you'll find that pk. Suppose radius is more, pk would be less. Okay, the pressure around pk would be less. And suppose radius is more, p naught will be pk will be less. That is what. So as there is pressure which is getting developed into this equation. So as there is curvature that is getting formed in this equation, so the equilibrium pressure over here, if there is lesser radius, there will be higher pressure. If there is uh, more radius, then there will be lesser pressure. So if we talk of a small drop, like, and if we talk of a larger drop, okay, let us consider like this only. A smaller drop which has a lesser radius would be having a higher vapor pressure, and a larger drop which would be having a larger radius will have a lesser vapor pressure. This is what is getting us because there is an inverse relation between this. So what does it give? A higher vapor pressure means it can easily evaporate. A lower vapor pressure means it cannot easily evaporate. That's what does it mean. A higher vapor pressure liquid would have a lower boiling point, and a lesser vapor pressure liquid would have a higher boiling point. Okay, so this kind of a drop is unstable. Okay, so a smaller drop is unstable. That's what it gives us. Okay, and a larger drop is stable. That comes out from the Kelvin's equation. But let us consider the negative side of it. Since this is a convex type of a liquid, or this equation is used. Now we go into a liquid itself. Okay, suppose there is some liquid. Okay, and there is formation of bubbles into this liquid. Okay, this is a bubble. This is a bubble. Okay. Now, if we look into the interface, this is a negative interface. We're talking of the liquid. So it is like, as we talked in this case, like this. So pressure बाहर कम है, अंदर ये लिक्विड है, बाहर गैस है. यहाँ पर ये गैस है और ये लिक्विड है. हम बबल की बात कर रहे हैं. जब बबल की बात कर रहे हैं तो हमें ये इक्वेशन यूज करनी है. ओके, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव कर्वेचर ओवर हियर. सो अगर आप ये इक्वेशन यूज करेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड अ स्मॉलर, जैसे जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका अंदर जो प्रेशर रहेगा वो भी ज्यादा होगा क्योंकि नेगेटिव है. पीके इज द इंटरनल प्रेशर. यहाँ का जो प्रेशर है वो पीके रहेगा. तो जो अंदर प्रेशर रहेगा फॉर अ लार्जर ड्रॉप, इफ आर इज मोर पीके इज मोर बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव साइन. इफ आर इज लेस पीके इज लेस. ओके, लार्जर ड्रॉप विल हैव अ हायर प्रेशर इनसाइड. ओके, higher pressure, and a smaller drop would have a lower pressure. Okay, that is, a larger bubble would have a higher pressure and a smaller bubble would have a lower pressure. So this is getting clear from the Kelvin's equation. Okay, कि जो छोटा बबल है उसके अंदर का प्रेशर कम है और जो बड़ा बबल है उसके अंदर का प्रेशर ज्यादा है. और कन्वेक्स, जब लिक्विड की बात कर रहे थे, जब हम ड्रॉप की बात कर रहे तब भी अपोजिट है. देखिए, जब ये लिक्विड बनाया मैंने, ठीक है, तो ये जो लिक्विड है इसका हायर वेपर प्रेशर है, इसका जो है लोअर वेपर प्रेशर है. तो ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है. सिमिलरली, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर अंदर स्टेबल है, अंदर ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर चाहिए किसी बबल को फॉर्म करने के लिए ताकि वो
एकदम से पंचर अप ना हो जाए, ताकि प्रेशर से वो बिल्कुल खत्म ना हो जाए। ओके, वी नीड अ हायर प्रेशर इनसाइड द बबल टू इट बी स्टेबल। सो यहाँ पर भी बबल की केस में छोटा बबल अनस्टेबल है और बड़ा बबल स्टेबल है। ठीक है, बड़ी ड्रॉप स्टेबल है, छोटी ड्रॉप स्टेबल नहीं है, बड़ा बबल स्टेबल नहीं है और बड़ा बबल स्टेबल है और छोटा बबल स्टेबल नहीं है। दिस इज व्हाट is giving is coming up from the Kelvin's equation. ठीक है, because of the curvature of the liquid, because not it is possible that not every time which we talk of कि लिक्विड जो है वो सरफेस रहेगा। जैसे बबल की केस में यहाँ पर सरफेस तो फ्लैट नहीं है, खास उस ड्रॉप की केस में यहाँ तो सरफेस फ्लैट नहीं है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है देखिए। अब कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि जनरली जब बॉइलिंग हम करते हैं किसी भी लिक्विड को, अगर हम बॉइल कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी लिक्विड को बॉइल कर रहे हैं और जनरली जब बॉइलिंग करते हैं तो देयर विल बी सम साइड्स व्हिच आर रफ। ओके, रफ साइड्स रहती हैं। ठीक है, अब रफ साइड्स रहेंगी तो क्या होता है कि बबल फॉर्मेशन आसान हो जाता है। ठीक है, वो न्यूक्लिएट कर देता है, तो न्यूक्लिएशन हो जाता है। ओके, न्यूक्लिएशन हो जाता है, बबल फॉर्मेशन आसान हो जाता है। इसीलिए अगर हम रफ सरफेस में पानी को बॉइल करेंगे, किसी भी लिक्विड को बॉइल करेंगे, तो आसानी से 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाएगा। ओके, एट 1 एटमॉस्फेयर। बट अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने जो हमारा जो लिक्विड था, वाटर था, सपोजिटली बहुत ही प्योर है और यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। ठीक है, क्या है, स्मूथ सरफेस। तो अब क्या होगा कि जैसे बॉइलिंग प्रॉपर होने के लिए बबल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बबल फॉर्म होंगे तभी ये एस्केप कर पाएगा, लिक्विड जो है वो एस्केप कर पाएगा प्रॉपरली। मतलब वेपोरेशन तब भी होती रहेगी, पर मैक्सिमम वेपोरेशन जो हम बॉइलिंग में बात करते हैं, मैक्सिमम वेपोरेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि बबल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, देखिए, जब भी बबल बनेगा तो सबसे पहले तो छोटा बबल बनेगा, है ना। बड़ा बबल तो बाद में बनता है, पहले तो छोटा बबल बनेगा। और अभी हमने देखा कि छोटा बबल जो है वो बड़े बबल के मुकाबले में अनस्टेबल होता है। तो जैसे ये बनेगा, अब यहाँ पर कोई न्यूक्लिएशन साइड भी नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी मच स्मूथ। नॉर्मल केस में क्या होता है कि छोटा बबल बनता है पर न्यूक्लिएशन साइज हो रहा है, तो बहुत ज्यादा छोटे बबल्स बन जाते हैं और बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। बट यहाँ पर क्या है कि छोटा बबल बना, अब यहाँ पर कोई न्यूक्लिएशन साइड नहीं है, तो बहुत कम रेयरली छोटा बबल एक बनेगा, और वो भी इतना अनस्टेबल है कि इट वोंट सस्टेन। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, खासतौर से स्मूथर सरफेस में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म बबल्स। ओके, ठीक है, अब क्योंकि बबल्स नहीं बन रहे हैं, तो इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन प्रोसेस में मैक्सिमम वेपर फॉर्मेशन होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो क्या होगा कि हमने हीट दिया, अब वैसे तो बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसके ऊपर वाटर का टेम्परेचर जाना नहीं चाहिए। बट क्या होता है, क्योंकि बबल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर 110 या 100 डिग्री सेल्सियस ज्यादा चला जाता है एंड इट बिकम्स सुपर हीटेड। ओके, ओनली व्हेन देयर इज अ स्मूथ सरफेस। रफ सरफेस में ऐसा नहीं होगा, स्मूथ सरफेस है, वाटर प्योर है, देयर इज नो न्यूक्लिएशन दैट कैन हैपन। तो इसमें क्या हुआ कि बिकॉज स्मॉलर बबल्स का बनना हमने देखा केल्विन इक्वेशन से, स्मॉलर बबल्स आर वेरी मच अनस्टेबल, दे कैन नॉट फॉर्म, हेंस वाटर कैन हैव a higher temperature than its boiling point and it becomes superheated, very much superheated। और जैसे हम इसमें कुछ भी डालेंगे, थोड़ा सा न्यूक्लिएशन करेंगे, एकदम से बम्प करके सारा जो वाटर है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, तो देयर विल बी बम्पिंग ऑफ इट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे छोटा बबल बना तो अनस्टेबल है, इसलिए अगर बॉइलिंग होना है तो बड़ा बबल बनना पड़ेगा। मतलब देयर इज, ऐसा नहीं है, मतलब बड़ा बबल एक बार बनेगा, स्टेबल हो जाएगा और वो और बड़ा होता जाएगा। जब भी आपने बॉइलिंग करते हुए देखा है भी, अगर बड़ा बबल बना है, छोटा बड़ा बबल बना है, तो वो और बड़ा होता जाएगा, बिकॉज अ मच बिगर बबल इज मच स्टेबल इन अ लिक्विड, सो दैट इज व्हाई बॉइलिंग कैन हैपन। बट जब न्यूक्लिएशन साइट्स नहीं है, छोटे बबल्स नहीं बन सकते और बॉइलिंग प्रॉपर नहीं होगी, इसीलिए हमारा जो लिक्विड है, इट कैन गो बियॉन्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड इट कैन गेट सुपर हीटेड। दैट इज व्हाई सुपर हीटेड लिक्विड का कंसेप्ट आता है, एंड दिस वी कैन गेट बाय टेलिंग द केल्विन्स इक्वेशन। और केल्विन इक्वेशन क्यों यूज करें, बिकॉज बबल फॉर्मेशन हो रहा है, और बबल फॉर्मेशन क्या करता है, इस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देता है हमको, ठीक, कंकेव कर्व देता है। और कंकेव कर्व के लिए हमें वेपर प्रेशर देखना पड़ेगा, जो वेपर प्रेशर अलग रहता है। ठीक है, कंकेव कर्व के लिए अंदर जो वेपर प्रेशर है वो काफी कम है, ठीक है, छोटे रेडियस के लिए। और बड़े रेडियस के लिए अंदर जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, इसलिए बड़े जो बबल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। सो दिस वी कैन गेट फ्रॉम द केल्विन्स इक्वेशन। सो होप आपको ये समझ में आया हो, एंड इफ देयर आर मोर डाउट्स, आई वुड लाइक यू टू गेट इनटू द कमेंट सेक्शन एंड आस्क,
इसकी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जनरली ये चीज़ें कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं, इवन मास्टर्स लेवल पे भी नहीं पढ़ाते। हमने भी ये चीज़ रिसेंटली देखी है, इसको ऑब्जर्व करी है, एंड वी विल हैप्पी इफ देयर आर मोर क्लैरिटीज which can come on the formation of bubbles, the formation of a drop, why a bigger drop is stable, why a bigger bubble is stable, and how in other different ways Kelvin equation can be used. So thank you so much for watching this video.